Okay. So now I hope you guys understand what decarboxylation means. Decarboxylation means removal of a carbon dioxide molecule, carboxyl carbon dioxide. Okay, and this actually removes one carbon atom from it, and as a result, you get an alkene. An alkane. Okay. And the decarboxylating agent that you are going to use is soda lime, meaning sodium hydroxide in presence of calcium oxide. Okay, this converts the fatty acid group into an alkane. Okay. Then Cobb's electrolytic method. All right, now this is not the conventional electrolysis that we've been doing. Okay, this is just something that most of it needs to be learned. Okay, so I'll try making it as easy as possible. All right, but so let's get started. So when concentrated solution of sodium or potassium salt of a monocarboxylic acid is electrolyzed, an alkane is produced. This is the principle of Cobb's electrolytic method. Okay, you have to use a concentrated solution of these two salts of carboxylic acid. Okay, an alkane would be produced, which is suitable for production of only symmetrical alkanes with this type of configuration. Okay, but you cannot produce methane with it because it's not symmetrical, right? But you can produce ethane with it. Okay, this can be produced, but this cannot be produced. Similarly, you cannot produce CH3, CH2, CH3, meaning you cannot produce propane with it, but you can definitely produce another molecule with it. Okay, so it is used for the production of symmetrical alkenes. Now, this is also a point to be noted in the point of an MCQ. Okay, methane cannot be prepared by this method again. So it's written right over here, another MCQ right over here. So 1, 2, 3 marks that you need to learn from here. Okay, concentrated solution of sodium or potassium salt needs to be electrolyzed to produce an alkane. Okay, it is suitable only for symmetrical alkanes and methane cannot be produced. And the general method is given. So you've got the sodium salt of an acid. Okay, let's say this is your carboxylate group. Okay, now this R group will combine and two molecules have been used. Two R groups will combine together and form RR alkane. Okay. So it's right over here. So and again, carbon dioxide would be released because COO negative has to be released out as carbon dioxide molecules. Okay. So similarly, the sodium will react with the water and will form sodium hydroxide and hydrogen. Okay. So yeah, so that's how you get it. So you can learn it this way. You can learn the entire equation. You need to learn the entire equation as well because sometimes they do ask you to identify the correct equation of the Cobb's electrolytic method. Okay, so if the carboxylate that I'm gonna use is, okay, now tell me, can I use a salt of methanoic acid in here? What will methanoic acid give me? Yes or no? Can methanoic acid be used? Yes or no? Methanoic acid is one carbon acid, HCOH. Can it be used? In case of methanoic acid, what will you get? After two molecules of carbon dioxide are removed, will any carbon be left here? No. So you won't get anything. So methanoic acid cannot be used here. Okay? Momina, what do you think? Will methanoic acid be used? Yes or no? So no. Yeah, so why no? Tell me why no. Look at the production of the alkane. It has the two R groups which are present in this carboxylic acid group, right? The R which is present in the carboxylic acid after removal of the COO. Okay, COO if is removed out, this R will combine with another R and form an alkane, correct? In case of methanoic acid, the salt will look somewhat like this. It will look like this, HCOO negative with a sodium ion here. Now, when two molecules of this combine together with water and electrolysis takes place, what will happen? This COO negative will be removed out as two molecules of carbon dioxide, right? So ये तो गया. Now only hydrogens are left. This means अगर ये reaction होता भी है somehow, so you're gonna only get two molecules of hydrogen instead rather than an alkane. So it cannot be used to produce an alkane. ठीक है? Get it? Yes, sir. बाकियों को समझ आया?
If it's clear, please show me raise of hand. How why methanoic acid cannot be used in Kolb's electrolytic technique to create an alkene? निशिता समझ आया? निशिता Nishita, can you hear me? Hello. Nishita. Okay, I don't think she's there. Okay, let's move on. So I'll give you another example, and you guys have to tell me the alkane that I'll get. Okay. This is sodium propanoate acid. If it undergoes Kolb's electrolytic technique, Kolb's electrolysis, what will I get? How many carbon alkane? So ethane. Ethane. Think again. This is an R group, right? This is one R group. Will combine with another R group of the same type and will form R. So it will have double carbon atoms. Butane, good आपका. Butane, not ethane. Butane. इसके दो molecules use होंगे, समझ रहे हैं? When two molecules combine together, तो सबसे पहले तो COO negative would be removed out as two molecules of carbon dioxide. उससे छुटकारा मिल गया. फिर उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ और क्या निकल रहा था? हाइड्रोजन. और यहाँ बीच में जो है ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला जो कार्बन है, सिर्फ कार्बन, द हाइड्रोकार्बन चेन, ये आपका आर ग्रुप है. तो इसके डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का एल्केन बनेगा आपके पास. ये सिमेट्रिकल एल्केन होना चाहिए. ठीक है, तो क्योंकि you have two carbons there, so you are going to get an alkane with 4 carbons. Having carbon atoms double the number of carbon atoms present here. सही है? Get it now, Momina? You get butane here. Yes, sir. Good आपका. ठीक है? अच्छा, बस एक लास्ट एग्जांपल. If this is the acid, what will I get as an alkane if it undergoes Kolb's electrolytic technique? What would be the alkane that I'll get? Ethane. Good, Muskan. Having double the carbon atoms. Okay, ये वाला कार्बन इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ R ग्रुप का होगा. इसके डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो जाएंगे, सो इट्स एन इथेन. सही, बस ठीक है. आगे चलते हैं, इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं. इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता वैसे मैकेनिज्म, लेकिन देख लेते हैं फिर भी. सही है. It is known to involve the following mechanism when the potassium salt of acetic acid is electrolyzed. अच्छा, पोटेशियम सॉल्ट भी यूज कर सकते हो, सोडियम सॉल्ट भी यूज कर सकते हो, कोई भी सॉल्ट यूज कर सकते हो, इट डजंट मैटर. ठीक है, इन दोनों में से एसिटिक एसिड इज एथेनोइक एसिड, 2 कार्बन एसिड. सही है. तो इसमें प्रोडक्ट क्या होगा? इथेन. ठीक है. acetate ions migrate towards the anode. Why anode? An area. Give up an electron to produce the acetate free radical, which decomposes to give the methyl free radical and carbon dioxide. Two such methyl radicals combine to give ethane. ये इसका मैकेनिज्म है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ. फिर भी आप अगर याद कर लें तो अच्छी बात है. देख लें आप यहाँ पर, दिस इज पोटेशियम एथेनोएट. ठीक है, पोटेशियम एथेनोएट. तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट में आपके पास क्या मिलेगा? क्योंकि इसके R ग्रुप में एक ही कार्बन है, तो प्रोडक्ट विल हैव एन एल्केन हैविंग 2 कार्बन्स. So
This is your product, alkane with 2 carbons. ठीक है. Now, how will this reaction proceed? Basically, acetate ion. What is acetate ion? Acetate is this ethanoate ion. इसको कहते हैं. An O negative. It has a negative charge, right? Since it is negatively charged, it will be attracted towards the anode of the electrolytic cell. Okay, anode का तो सबको पता होगा. Anode होता है positively charged electrode, right? Because this is a negative ion, the negative ions are attracted towards the positive electrode, that is the anode. सही है. एनोड पे जाकर ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा. तो एथेनोएट जो है यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल, ठीक है, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल से तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, रिलीज करेगा और एक इलेक्ट्रॉन अभी भी ऑक्सीजन पे बचा हुआ होगा. ठीक है. लेकिन अब ये जो स्पीशीज बना है, दिस इज न्यूट्रल. Okay, this is a neutral species having no charge at all. This neutral species will now decompose, breaking this bond. Okay, as this bond breaks, this entire carboxylate group will form carbon dioxide molecule, and left-sided CH3 alkyl groups will be given out. Okay, they'll be given out as 2 methyl groups or 2 alkyl groups. These 2 alkyl groups will combine together and form the alkane. Okay, that's the basic mechanism, having 3 steps at the anode. And cathode पे क्या हो रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन एनोड में रिलीज हुए तो कैथोड में जाके डिपॉजिट होंगे. कैथोड में होता है वाटर का मॉलिक्यूल जिसके साथ रिएक्शन हो रहा होता है, राइट? ठीक है, याद है, रिएक्टेंट साइड पे वाटर मौजूद होता है. वाटर विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स एंड विल डिकम्पोज इनटू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयंस. एंड ये हाइड्रोक्साइड आयंस कौन एक्सेप्ट कर लेगा? पोटेशियम फॉर्मिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, तो ये था एक जनरल मैकेनिज्म. अब ये कैथोड का स्टेप अगर समझ नहीं आया तो इसका मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको. इसमें ये हो रहा है कि आपका जो वाटर मॉलिक्यूल है ना, इसमें ये इलेक्ट्रॉन गेन कौन कर रहा है? बेसिकली ये जो दो सॉरी जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन इज गेनिंग द इलेक्ट्रॉन. ठीक है, पहले ये हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन बनता है, फिर उसके बाद हाइड्रोजन के 2 का मॉलिक्यूल बनता है. बस उस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस ये ओवरऑल इक्वेशन यहाँ दी हुई है. ठीक है, ये एक इक्वेशन नहीं होती, ये 2-3 स्टेप्स होते हैं. ठीक है, लेकिन बस ये ओवरऑल इक्वेशन काफी है. ये हाइड्रोक्साइड जो है ये फिर उस पोटेशियम जो कि जो भी सॉल्ट, अगर यहाँ सोडियम होता तो उसके साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेता. तब मैं आपसे अगर पूछूं कि एट द कैथोड what is the pH of the solution near the cathode, so it's going to be alkaline. Okay, the carbonyl compounds, acidic aldehydes and ketones. तो कॉल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड का जो ये जनरल इक्वेशन है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें कि if an salt of an acid is given to you, you should be able to predict the number of carbon atoms in the product alkane. ठीक है, बाकी मैकेनिज्म से अगर क्वेश्चन आ गया तो वो आपकी किस्मत है, बट यूजुअली नहीं आता. ठीक है, और मैकेनिज्म भी बड़ा सिंपल है. पहले स्टेप में क्या हुआ, ये एनोड पे डिपॉजिट हुआ तो एनोड पे ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, वो इलेक्ट्रॉन कैथोड पे चला जाएगा, और फिर उसके बाद इसके ब्रेक डाउन की बारी आएगी. ब्रेक डाउन में सिंपल है, सिर्फ इसके जो ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, क्योंकि ये डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, द कार्बोक्सिल ग्रुप will give out carbon dioxide. और जो बच गया it will form the alkane. Simple. ठीक है, so is this Cobb's electrolytic technique clear now? If it is, please show me a raise of hand. Ways. Okay, so just learn this equation and practice the product formation. Alkenes. From carbonyl compounds, aldehydes or ketones can also be used to form alkanes. Okay, let's just look at them. Again, this is something you'll need to learn. इसमें याद करने वाली चीज ज्यादा है. So carbonyl compounds पहले कहते किसे हैं, तो ये aldehydes और ketones को कहते हैं. ठीक है, carbonyl group is actually a functional group
हैविंग C डबल बॉन्ड O, ठीक है, इस ग्रुप को कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। और ये ग्रुप अगर अकेला प्रेजेंट होता है ना तो वो ग्रुप सिर्फ कीटोन होता है, ठीक है। अगर इसी ग्रुप के आगे अगर दोनों साइड्स पे R होते हैं, मतलब दोनों साइड्स पे अल्का ग्रुप्स होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, कीटोन। इसी ग्रुप के आगे अगर एक हाइड्रोजन होगा, ठीक है, दूसरे साइड पे एक R ग्रुप होगा, या हाइड्रोजन भी हो सकता है, ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है ना, इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। द कार्बोनिल ग्रुप अटैच्ड टू अ हाइड्रोजन, कार्बोनिल ग्रुप alone is ketone, carbonyl group with a hydrogen is an aldehyde, ठीक है। So these carbonyl compounds can be used to give alkanes as well. Carbonyl groups of aldehydes or ketones are reduced to methyl or methylene group respectively by Clemmensen और Wolff-Kishner's reduction, ठीक है। ये दो नाम हैं, ये आते हैं, ठीक है। सो Clemmensen's टेक्निक और Wolff-Kishner's reduction टेक्निक, ठीक है। द कार्बोनिल ग्रुप्स आर रिड्यूस्ड, ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप्स मतलब कौन से ग्रुप्स की बात हो रही है, इस ग्रुप की बात हो रही है, या फिर इस केस में भी कौन से ग्रुप की बात हो रही है, सिर्फ इस केस की बात हो रही है, ठीक है। by using these two techniques they are reduced to, because ये एक कार्बन होता है ना कार्बोनिल में, तो these are reduced. And why are we using the term reduced? Because oxygen will be removed and hydrogen would be added to form a methylene group, methyl group or a methylene group, ठीक है। मिथाइल ग्रुप आपको पता है CH3 को कहते हैं. So you are removing oxygen and adding in hydrogen, therefore it is a reduction reaction. So, and a special reduction reaction named after two scientists, Wolff and Kishner's, okay. In the former reaction a ketone is reduced, Clemmensen की बात हो रही है, it is reduced to an alkane using zinc, amalgam and hydrochloric acid, whereas in this other one an aldehyde is reduced to alkane with hydrazine in presence of potassium hydroxide. Now see the reagents are given, the conditions are given. Wolff-Kishner, WK कह देता हूँ मैं उसे. Wolff-Kishner में क्या होता है भाई? You've got the alkane, the aldehyde which is being reduced to an alkane. कैसे? In presence of hydrazine and potassium hydroxide plus hydrazine. Hydrazine कहते हैं NH2 को. देखिए ये फॉर्मूला होता है उसका. N2H4 को कहते हैं हाइड्रोजीन. Potassium hydroxide and hydrazine combined will reduce the aldehyde to an alkane, ठीक है. ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ग्रुप जो है इसको आपने किस में कन्वर्ट कर दिया? CH2 ग्रुप में या CH3 ग्रुप में, ठीक है. एक वोल्फ-किश्नर में हो रहा है ये सिर्फ, सही है. ये पहला वाला कीटोन किस में रिड्यूस हो रहा है? क्लेमेंसन टेक्निक, Clemmensen technique and Wolff-Kishner technique. Wolff-Kishner is for aldehydes and Clemmensen is for ketone. Clemmensen and ketone, सही है. K. Clemmensen stands for ketone, ठीक है, and the other one stands for aldehyde, ठीक है. Clemmensen ketone reduction into an alkane, and Wolff-Kishner is for aldehyde reduction to an alkane. Clemmensen में you use zinc and हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है. जिंक एमलगम कहते हैं. एमलगम बेसिकली जिंक एंड मर्क्यूरी का मिक्सचर होता है, एलॉय होता है, उसे कहते हैं, ठीक है. जिंक एमलगम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सही है. दिस इज इन क्लेमेंसन, कीटोन क्लेमेंसन. So Wolff-Kishner's उनके And वो लिए है. जी So Wolff-Kishner's जो है वो कैंडिडेट्स के लिए. आपकी आवाज कट गई, दोबारा बोले. जो Wolff-Kishner's है ये कीटोन के लिए, एल्डिहाइड्स के लिए. वोल्फ-किश्नर सिर्फ एल्डिहाइड के लिए, ठीक है. यहाँ देखें फॉर्मल रिएक्शन क्लेमेंसन की बात हो रही है. इट इज यूज्ड टू रिड्यूस कीटोन, सही है. एंड वोल्फ-किश्नर इज यूज्ड टू रिड्यूस एल्डिहाइड, ठीक है.
वुल्फ किश्नर में कौन क्या यूज हो रहा है? हाइड्रोजीन एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज हो रहे हैं। एंड क्लेमेंसन में क्या यूज हो रहा है? जिंक एमलगम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, दिस इज क्लेमेंसन क्योंकि यहाँ कीटोन है। ठीक है, दिस इज क्लेमेंसन टेक्निक एंड दिस वन इज बिकॉज हाइड्रोजीन प्रेजेंट है, यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, तो दिस इज वुल्फ किश्नर। इसमें आप देख रहे हो तो एल्डिहाइड है। ठीक है, ये वाला ग्रुप इसको एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। एंड इस केस में यू ओनली हैव द कार्बोनिल ग्रुप, राइट? ये कौन सा ग्रुप है भाई? कीटोन है, तो ये कौन सा रिएक्शन होगा? क्लेमेंसन होगा। सही है, कीटोन रिड्यूस टू एन एल्केन। चेंजेस क्या है? सिर्फ ये कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है ना, इसकी जगह CH2 आ गया। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है? तो कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन विद हाइड्रोजन है, तो इसमें कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन की जगह क्या आ गया? बस हाइड्रोजन लग गए। तो आपने बस सिर्फ इस ग्रुप को इसमें कन्वर्ट कर दिया CH2 ग्रुप में। ठीक है, इससे ऑक्सीजन पहले निकाला और इसमें 2 हाइड्रोजन ऐड कर दिए। सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये कौन सी टेक्निक है भाई? क्लेमेंसन एंड वुल्फ किश्नर। Clemenson is for ketone and Wolf-Fishner is for aldehyde. In Clemenson, you use what are the condition in Clemenson? Clemenson, ठीक है? So it's gonna be zinc amalgam and zinc. Zinc ends with C, right? So zinc, ठीक है? So zinc amalgam plus HCl. And Wolf-Kishner में क्या use होता है? Wolf-Kishner में you use potassium hydroxide, hydrazine, and heated at 200. Right here. सही, तो इसमें भी हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं, इसमें भी हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं। बोथ ऑफ देम आर रिडक्शन टेक्निक्स। बस इनकी कंडीशंस इंपॉर्टेंट है और ये प्रोडक्ट बनाना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स एल्केन्स आर प्रोड्यूस्ड। सो गाइस, यहाँ ब्रेक ले लेते हैं, नमाज टाइम हो रहा है यहाँ पर। ये नमाज के बाद कंटिन्यू करेंगे, मैं टर्न ऑफ नहीं कर रहा। सही है, राइट। So this was all about these two techniques of converting aldehydes and ketones into alkanes. Okay, the C. Clemenson and Wolf WK technique. Okay, Wolf Kishner from Grignard reagent. Okay, so Grignard's reagent is very important. Okay, Grignard reagent is named after the scientist Victor Grignard. He got the very first Nobel Prize of Chemistry by creating this reagent, Grignard reagent, and this is how it looks like. Okay, RMGX is the general formula for Grignard's reagent, in which R represents an alkyl chain, Mg represents magnesium atom, and X represents halide atom. Okay, so R can be methyl, ethyl, propyl, butyl, any alkyl chain with magnesium and bromine. Okay, when it is reacted with water in presence of ether and acid, it can create an alkane along with a byproduct. अब ये बना कैसे ये देख लेते हैं. Basically, this R group that you have with the Grignard reagent, when it reacts with water, this partial positive part of the water will combine with the partial negative part of Grignard reagent, forming your alkane. Okay, because you know the water is also polar, right? So the oxygen is partial negative and one of the 2 hydrogens is partial positive. Similarly over here, this magnesium when it is attached to bromine is considered entirely partial positive because magnesium has a very low electronegativity. Remember, it is group 2 metal, so has a very low electronegativity. So as compared to magnesium, carbon will be partially negatively charged. Okay, so this methyl group along with the hydrogen will combine together and form an alkane, which is methane in this case. And बाकी जो इसका ये partial negative part है, वो इस partial positive part के साथ combine करके आपके पास एक byproduct बना देगा, ये रहा magnesium with bromine and OH. ठीक है, a Grignard reagent has 2 components. ठीक है, it has an organic component as well as an inorganic component as well. Organic and magnesium क्या है भाई? ये है एक inorganic component. Both of them are combined together in Grignard's reagent. ये भी एक question था. So alkyl halides reacted in anhydrous ether. That's the condition. Condition is important again.
with magnesium to form alkyl magnesium halides known as Grignard's reagent. This is how Grignard reagent is produced. How is it produced? When alkyl halide, matlab Rx, combines with magnesium in presence of ether, meaning no water is present. Okay, no water is an anhydrous, no water, so you'll get your RMGX or Grignard reagent. Alkyl magnesium halide भी कहते हैं. And this alkyl magnesium halide, when it's treated with water or dilute acid, will give you alkane. ठीक है, पहले केस में आपने वाटर के साथ किया in presence of the acid. दूसरी ये similar reaction ही है but with a different example. अब इस केस में अगर आप देखें तो this is the alkyl group, right? तो इसका ये जो partial negative part है इसके partial positive part से combine हो जाएगा, it will give you your alkane. ठीक है, and बाकी जो बच गया वो मैग्नीशियम के साथ एक covalent attachment बनाएगा. ठीक है, Grignard reagent में अब you have covalent attachment over here. So from Grignard's reagent, this is how you create alkanes by reaction with water in presence of dilute acid. इसके अलावा भी Grignard के reactions होते हैं जिससे आपके पास alkane बनता है, but अभी वो नहीं है तो उस पर नहीं जा रहे, बस यही वाली अभी के लिए याद रखें. ठीक है, this is the fifth method of preparing of preparation of alkanes using Grignard's reagent. ठीक है, तो अब कितने methods हमने total पढ़ लिए हैं preparation of alkanes. सबसे पहला सेबेशियर सेंडेंस रिएक्शन जिसमें आपके पास हाइड्रोजन वाज एडेड राइट टू एल्कीन्स. ठीक है, सो सेबेशियर की लिख रहा हूं मैं, सेबेशियर सेंडर. फिर सेकंड टेक्निक क्या थी? अल्काइल हैलाइड से आरएक्स से. वो कैसे थी? आरएक्स को जब आप किसके प्रेजेंस में जिंक और हेलोजेनिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्ट कराओगे तब भी आपके पास क्या मिलेगा? एक एल्केन मिलेगा along with the zinc halide. ठीक है, फिर उसके बाद इसी के साथ एक और अल्काइल हैलाइड्स की ही एक और टेक्निक हमने पढ़ी एंड दैट वाज इन प्रेजेंस ऑफ. उस केस में आप हाइड्रोजन डायरेक्टली ऐड कराते हो, लेकिन किस चीज के प्रेजेंस में? पैलेडियम चारकोल इन प्रेजेंस ऑफ हीट. प्रोडक्ट में आपके पास अगेन एक एल्केन along with हेलोजेनिक एसिड बन जाता है. ठीक है, फिर एल्डिहाइड्स कीटोन्स भी यूज किए हमने राइट. एल्डिहाइड्स आर रिड्यूस्ड टू एल्केन्स, रिडक्शन होती है राइट इन बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. एंड व्हाट वाज द फॉर एल्डिहाइड्स कौन सी टेक्निक यूज होती थी? Wolff-Kishner's reaction, Wolff-Kishner WK reduction. ठीक है, इसमें reagents क्या यूज होते थे? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड along with N2H4 जिसको हाइड्रोजीन कहते हैं. तो एल्डिहाइड्स क्या बन जाता था भाई? एल्केन बन जाता था आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन. ठीक है, बाकी बाय प्रोडक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है. फिर ये वुल्फ-किश्नर रिएक्शन है. ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, ये भूलिएगा नहीं. वुल्फ-किश्नर के बाद कीटोन्स को भी हम इस तरह से रिड्यूस करते थे. कीटोन का रिएक्शन का क्या नाम था? किसी को याद है कीटोन का नाम? क्लेमेंसन. हाँ, क्या दोबारा बोले? क्लेमेंसन. गुड, क्लेमेंसन्स टेक्निक. ठीक है, क्लेमेंसन्स टेक्निक एंड इसमें द रिएजेंट यूज्ड वाज जिंक एमलगम. Zinc along with mercury in presence of hydrochloric acid and heat at 400 था 200 था 200 था राइट 200 था. नहीं, इसके साथ 200 नहीं था, 200 ऊपर वाले के साथ था, यहाँ नहीं था, यहाँ बस सिर्फ हीट था. 200 was here for aldehydes. नहीं, हाँ, 200 is for aldehydes. For ketones you just heat it and product में again alkane मिल गया along with byproducts जो कि important नहीं है, बस alkane आपका important है.
ये दोनों में वैसे बाय प्रोडक्ट्स वाटर ही है, तो कुछ खास नहीं है इसमें भी उसमें भी। फिर उसके बाद फिफ्थ एक्चुअली ये वाला है, ठीक है, लेकिन एल्डिहाइड्स कीटोन्स को कलेक्टिवली एक ही रिएक्शन में डाल दिए कार्बोनिल कंपाउंड्स के रिएक्शन में, ठीक है। एंड फिफ्थ जो है वो है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट किसे कहते हैं? RMGX को कहते हैं, ठीक है। RMGX मतलब एल्कल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है। क्रिएट कैसे किया था हमने इसको? जब एल्कल हैलाइड रिएक्ट करता है मैग्नीशियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ईथर and in absence of water, okay, no water is present, so it is anhydrous. So you get, अच्छा, and it must be anhydrous because अगर water होगा तो क्या हो जाएगा? Reaction हो जाएगा, ठीक है। You will get RMGX, a Grignard reagent, ठीक है। Now this Grignard reagent when is exposed to water, what happens? बेसिकली वाटर में ऑक्सीजन में पार्शियल नेगेटिव एंड हाइड्रोजन से पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। रिमेंबर इस केस में भी ऐसे ही कुछ है कि मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव तो इसमें पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव, बट दिस वन इज नॉट इन्वॉल्व, ठीक है, तो इसको इग्नोर कर देते हैं। अब सिर्फ आर को देखते हैं, तो दिस आर द पॉजिटिव, द पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव, बोथ ऑफ देम विल कंबाइन टुगेदर एंड विल फॉर्म योर एल्केन अलॉन्ग विद जो मैग्नीशियम का आर गया है वहीं पर मैग्नीशियम के साथ कौन सा ग्रुप अटैच हो जाएगा? ये वाला ग्रुप, यानी OH group, OH with X, ठीक है। This is your alkane that you get, the Grignard reagent. So these are the 5 techniques of preparation of alkanes, ठीक है। Hydrogenation, sebaceous cendon, इस केस में निकल कैटलिस्ट was used and temperature was 200 to 400 बोला था, right? but 200 mostly होता है। and then and इसकी application क्या थी? vegetable ghee, remember vegetable ghee? what was vegetable ghee? vegetable ghee healthy होता है unhealthy होता है, ये बताएं मुझे। वेजिटेबल घी है, सो अनहेल्दी था, बट मार्जरीन। तो वेजिटेबल का है, तो अनहेल्दी क्यों? सो वो सैचुरेटेड है। Yes, exactly. It's not vegetable oil. It's vegetable ghee. Vegetable ghee is actually fat. It's margarine. It's saturated. Okay. So this was a quick summary of what we've done in summarizing the alkanes, for meaning the production of alkanes, preparation of alkanes. Now let's do reactivity of alkanes. Alkanes generally are unreactive or inert. Okay, generally are inert. The reactivity is very low. Okay. Oh, okay, so it's written right over here. Under ordinary conditions, they are inert towards acids, alkalis, oxidizing, reducing agents. However, under suitable conditions, they will undergo 2 types of reactions only. What are the 2 types? You've already done them. Substitution reactions and thermal and catalytic reactions. अच्छा, ये जो है ना, ये substitution reactions का पूरा नाम होता है free radical substitution. You've done this in A levels as well. Okay. And कैटालिटिक रिएक्शंस होते हैं एंड थर्मल रिएक्शंस होते हैं। कैटालिटिक रिएक्शन में आपके पास क्या कौन से रिएक्शन आ जाते हैं? क्रैकिंग आ जाते हैं, ठीक है। थर्मल क्रैकिंग भी होती है, कैटालिटिक क्रैकिंग भी होती है, ठीक है। और एक और तीसरा रिएक्शन भी होता है वैसे, वो होता है कंबशन का रिएक्शन। All hydrocarbons can undergo combustion as well. Combustion is also of 2 types, complete and incomplete, ठीक है। The hallmark of incomplete combustion is formation of carbon monoxide, right? Carbon dioxide and water are generally produced incomplete in this one, in the complete one, ठीक है। These reactions take place at high temperature, ठीक है, ये वाले, because a lot of energy is needed, और on absorption of light energy। ये जो light energy की बात हो रही है ना, ये free radical substitution की बात हो रही है, okay। Free radical substitution requires light energy for initiation through the formation of highly reactive free radicals, ठीक है। free radical substitution इसीलिए कहते हैं इसे। Now, the unreactivity of alkanes under normal conditions may be explained on the basis of the non-polarity of the bonds forming them. This is an important reason. This is an MCQ as well. Why are they unreactive? Because they are non-polar. Then the electronegativity values of carbon, which is 2.5, and hydrogen do not differ appreciably, and the bonding electrons between them are equally shared, and so they are non-polar and stuff like that. Okay. So carbon hydrogen electronegativity difference is small, so this is a non-polar bond, and you know that, right? All hydrocarbons are non-polar, and if it is non-polar, so this is non-reactive. Okay.
Then inertness of the sigma bond. Remember sigma bond? How was sigma bond formed? Head-on overlap of which orbitals? So p orbitals. P orbitals. Good. So head-on overlap of p orbitals results in the formation of sigma bonds, and sigma bonds are inert. इसमें क्या होता है कि unreactivity can be explained on the inertness of the sigma bond as well. So in the sigma bond, the electrons are very tightly held together between the nuclei, which makes it very stable bond and very strong bond. Okay, because the electrons are very tightly held in a sigma bond. This is a stable, a strong bond. अगर ये stable है तो stable मतलब it will not easily change its state. It will stay as it is, right? So a lot of energy is required to break it. So the the electrons present in this can neither attack an electrophile nor a nucleophile can attack them. So both these facts make the alkanes less reactive. अच्छा ये nucleophile electrophiles क्या होता है इस बात को भी मैं आपको explain कर दूंगा. Electrophile is any species that is attracted to electrons. Okay, so meaning it is a positively charged species, and nucleophile is any species which is negatively charged or has a lone pair of electron. Okay, or lone pair of electrons. ठीक है, lone pair of electrons अगर present हो तो. सो जो न्यूक्लियोफाइल है वो जनरली अटैक करता है, मतलब रिएक्ट करता है विद अ बॉन्ड, एंड इलेक्ट्रोफाइल पर वो बॉन्ड अटैक करता है. ठीक है, बट इन दोनों के का कोई रिएक्शन नहीं हो पाता बिकॉज दिस इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल. ठीक है, सिग्मा बॉन्ड्स आर जनरली नॉन पोलर. नहीं, जनरली नॉन पोलर नहीं होते. सिग्मा बॉन्ड्स इन केस ऑफ एल्केन्स आर नॉन पोलर, दे आर एंटायरली नॉन पोलर. ठीक है, so these are the two reasons of why alkanes are not reacting, because they are non-polar and the sigma bond is inert because the electrons are very tightly held and it is very stable. ठीक है, तो ये दो पॉइंट बस याद कर लीजिए कि बहुत है. अब रिएक्शंस की जब बात कर लेते हैं, रिएक्शंस बड़े सिंपल है. कंबशन है, ठीक है, कंबशन आपको पता है कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है. ठीक है, कंप्लीट में क्या होगा भाई, all of the alkane would be heated in excess supply of oxygen and will produce carbon dioxide and water. ठीक है, बिकॉज दिस इज हाइड्रोकार्बन, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के अलावा कुछ मिलेगा भी नहीं. ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं मिलेगी. ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड अगर मिलेगी तो इट इज इनकम्प्लीट. So burning of an alkane in presence of oxygen is combustion, but complete is when it yields carbon dioxide and water and heat. The amount of heat evolved on 1 mole of hydrocarbon burned is called heat of combustion. Heat of combustion की definition आपसे पूछी जाती है. ठीक है, what is heat of combustion? इसे कहते हैं actually डेल्टा एच सी कहते हैं इसे. ठीक है, मोलर हीट ऑफ कंबशन, डेल्टा एच, एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन भी कहते हैं इसे. ठीक है, दिस इज एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन या हीट ऑफ कंबशन. एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन किसे कहते हैं भाई, द एंथैल्पी चेंज और द एनर्जी चेंज और द एनर्जी रिलीज व्हेन 1 mole of a compound is completely burned in excess supply of oxygen. ठीक है, this is called delta hc. The amount of heat evolved with 1 mole of hydrocarbon is completely burned to carbon dioxide and water. Although the reaction is exothermic, it requires a very high temperature to initiate at first because of the stability. ठीक है, क्योंकि ये पहले से स्टेबल है, ये रिएक्शन होगा नहीं इतनी जल्दी. तो उसको कराने के लिए पहले आपने क्या करना होगा, स्पार्क या हीट या फ्लेम या कुछ भी देना होगा. वो देने के बाद एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइडेड हो गई तो उसके बाद the reaction is gonna speed up. Okay, so you need to still provide the activation energy in this case. A combustion is a major reaction occurring in the internal combustion engines of automobiles, and a compressed mixture of alkanes and blah 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 is present. Okay, alkanes and air when they burn smoothly in the internal combustion engine and increases its efficiency because compressed mixture. ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि why is a compressed mixture of alkanes used? Because it helps increase the efficiency. ठीक है, एक एक लाइन से क्वेश्चंस आते हैं, आ सकता है ये. कंबशन होगी, फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन is also addition of oxygen. ठीक है, but as a result of that you will not necessarily get carbon dioxide, you may get other products as well. ठीक है, so incomplete oxidation लिखा हुआ है लेकिन incomplete combustion भी कहता है. ठीक है, limited supply of oxygen in air है results in the formation of carbon monoxide and soot. जो unburnt carbon होता है ना, ये carbon जो produce होता है इसको कहते हैं soot. ठीक है, and this soot actually it blackens the utensils, right? Blackens black deposition is there. Deposition, a black colored deposition comes over the utensils which are using.
एंड इसकी कोई फिक्स इक्वेशन नहीं होती, ठीक है। ये इक्वेशन, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, वैसे याद कर सकते हो तो कर लो, बट इसकी कोई फिक्स इक्वेशन नहीं होती, इट कैन वेरी, ठीक है। फिर कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। Catalytic oxidation, again, as the name suggests, it's just an oxidation in presence of a catalyst. Okay, lower alkanes when burned in presence of metallic catalyst at high temperature and pressure results in formation of useful product. Yeah, different catalysts will give you a different product. एक तो ये और दूसरा ये कि कैटालिटिक क्रैकिंग भी यूज होती है। क्रैकिंग तो अभी नहीं, बाद में करेंगे, बट ये कैटालिटिक ऑक्सीडेशन की बात हो रही है। तो लोअर alkanes when burned in presence of metallic catalyst at high temperature and high pressure would give you useful products. इसमें डिफरेंस सिर्फ ये है कि कैटलिस्ट इज यूज्ड, द कैटलिस्ट व्हिच आर जनरली यूज्ड आर एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो कि क्रैकिंग में यूज होते हैं। यहाँ पर इन्होंने कोई एग्जांपल दी नहीं है अभी, मेरे ख्याल से मैंने वो बाकी के पेजेस निकाले भी नहीं है इसमें। जितने नोट्स मैंने बनाने थे वो तो मैंने बना दिए हैं, पढ़ा भी दिए। टेक्स्ट बुक खोल लेते हैं। हाँ, सो हम यहाँ थे, ये सब कर चुके हैं हम कल। सही, फिजिकल प्रॉपर्टीज आप खुद पढ़ लीजिएगा, ये इतनी ज्यादा कुछ है नहीं पढ़ाने वाला। Reactivity of alkane substitution and thermal catalytic cracking, ठीक है, ये these reactions and ये भी हो गई। Oxidation में कैटालिटिक ऑक्सीडेशन की ये एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। कैटलिस्ट जो कि आप डिफरेंट कैटलिस्ट, डिफरेंट नहीं, सेम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, कॉपर, ठीक है। कॉपर इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन दिस केस फॉर कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, ठीक है। एंड इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर हायर फैटी एसिड्स यूज्ड इन सोप एंड वेजिटेबल ऑयल। अगेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ आ गई, पता चल गई भाई। Higher fatty acids used in soap and vegetable oil industry. So catalytic oxidation is, why is it necessary of alkane? So that it can produce fatty acids, higher fatty acids, and used in soap and vegetable oils. ठीक है? And the catalyst uses copper, and the conditions used are 400 degrees Celsius and 200 atmosphere. These are reaction and nitration of alkanes. Nitration. Basically, for nitration, nitration means addition of the N nitro group, NO2. ठीक है, इसमें अब ये हो रहा है कि nitric acid HNO3 होता है, right? This is a nitric acid that you use. Substitution reaction of alkanes in which the hydrogen atom again is removed by the nitro group. अब इसमें ये आपके पास मीथेन का मॉलिक्यूल दिया हुआ है, राइट? So CH4 है. So in this case, one of the 4 hydrogens would be replaced by the nitro group. अब ये इसके ये वाला हाइड्रोजन फॉर एग्जांपल आप निकाल लो, ठीक है, इसको आपने निकाल लिया तो क्या बनेगा? मेथल ग्रुप बच जाएगा, राइट? इसी के आगे आपने एक और नाइट्रो ग्रुप ऐड कर दिया, तो नाउ द मॉलिक्यूल बिकम्स नाइट्रोमीथेन, ठीक है, along with water. And the temperature needed is very high because again, to initiate the reaction, a lot of energy is needed because alkenes are generally very stable. Alkenes undergo vapor phase nitration, ठीक है, ये इसकी special type of nitration है, vapor phase nitration, ये भी MCQ है, ठीक है। Under drastic change at 400 to 500 degrees Celsius to give the nitroalkanes. They are used as fuel, solvents, and organic synthesis. Then halogenation, that's the major reaction, halogenation, free radical substitution की। So ये जो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन थी, इसमें जो रिएक्शंस थे वो हम याद करें? ये वाले सर कैटालिटिक ऑक्सीडेशन वाले, हाँ जी। इसमें ये मीथेन है, मीथेन से आपके पास मिथाइल अल्कोहल बन गया। फिर इसके बाद ये, हाँ ये तो ऑब्वियसली ये वाले तो आपको पता है वैसे, ये वाले, लेकिन ये हम उसमें करेंगे दोबारा से
अल्कोहल के चैप्टर में और एल्डिहाइड एंड कीटोन में हम करेंगे, लेकिन ये याद करने हैं। यस, इसमें सिर्फ ये पहला वाला रिएक्शन नया है, इसको आप लाजमी देख लीजिएगा। इसके साथ मैं स्टार्स बना देता हूँ, लेकिन ये तीनों तो रिवाइज होंगे। ये प्राइमरी अल्कोहल को जब आप ऑक्सीडाइज करते हो तो क्या बनता है, रिमेंबर, एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करते हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, रिमेंबर। और कार्बोक्सिलिक एसिड को फर्दर ऑक्सीडाइज करते हो तो वो फिर कंबशन हो जाती है, उसके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाता है। लेकिन ये पता है, ये वाला हर कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं करता। दिस इज नहीं से ओनली मेथनोइक एसिड में होता है। only true for methanoic acid. No other carboxylic acid can undergo this reaction. ठीक है। One more is also there. एक और होता है, उसे कहते हैं इथेन डायोइक एसिड, वो भी करता है, लेकिन बाकी कोई नहीं करता। ठीक है, इस एसिड को कहते हैं इथेन डायोइक एसिड. This can also undergo this last reaction and form carbon dioxide and water. ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कहते हैं इथेन dioic acid. Dioic acid इसलिए कहते हैं because there are two carboxylic acid, and ethane because two carbons. सही है। मेथानोइक एसिड की जगह इथेन डायोइक एसिड भी यूज हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ही प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, और ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, अल्केन से हुआ, मीथेन से हुआ। मीथेन जब ऑक्सीडाइज होगा तो मिथाइल अल्कोहल बनाएगा। ठीक है, ये भी याद रख लीजिए। और सिंपल है, बिकॉज ये ऑक्सीजन है, आके बस हाइड्रोजन के साथ लग गया, अल्कोहल लग गया। सही। हेलोजनेशन एंड यूजेस ऑफ एल्केन है। बस आई गेस हम यहाँ पर एंड कर देते हैं क्लास को। ये हेलोजनेशन ऑनवर्ड्स जो है ना,